I am Menakshi Upreti. Top focus remains the gruesome murder of Shraddha Walkar by her boyfriend Aftab Poonawala that has put the entire nation in a state of shock. NewsX is getting you all the latest developments. In a massive development, NewsX has accessed the CCTV footage outside Aftab's residence, and in a big revelation, we are getting to know that the police investigation now shows that the accused Aftab was inspired by a 12-year-old case of Anupama Gulati killing, in which her husband sawed her body into 72 pieces, froze them before dumping them over several years. The two horrific murders have several commonalities. Experts now say that they not only reveal the brutality of the killers, but also the fact that the murders were premeditated. In fact, far as the police is concerned, they're trying to get each and every update, each and every lead, gather as much evidence as they can, including scientific and forensic evidence to nail Aftab in the court of law. Manohar Kesri, my colleague, is joining us live from the Mehrauli forest. Manohar, you are present at the spot where Aftab reportedly dumped parts of his girlfriend Shraddha's body. The police, of course, had combed through the forest trying to find some body parts. Take us through really what's happening on the ground right now, the type of evidence which the police has been able to collect. देखिए बिल्कुल अब मैं अभी यही मेहरौली जंगल में हूँ और ये 500 एकड़ का जंगल है। और अगर हम बात करें तो अंदर अगर आप जैसे जैसे अंदर जाएंगे जंगल घना होता जा रहा है। दिल्ली पुलिस की 8 टीमें हैं जो अलग अलग जंगल के अलग अलग कॉर्नर पर हैं, और जो स्नीपर डॉग्स हैं उनके ज़रिए भी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और सड़क पर अभी भी पेट्रोलिंग की जो गाड़ी है वो भी पुलिस की मौजूद है। तो यहाँ पर जंगल में अभी इस तरह की गतिविधियाँ चल रही है। लेकिन न्यूज़ एक्स के पास एक एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उप्रेती। एक्सक्लूसिव जानकारी ये है कि अब दिल्ली पुलिस जो है सो तमाम बॉडी पार्ट्स के साइंटिफिक जांच कराने जा रही है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, जो फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट है, और CFSL मींस फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो लोधी रोड में है, उन दोनों के जो अधिकारी हैं, जो वहाँ एक्सपर्ट है, उनसे उन्होंने संपर्क साधा है। और हो सकता है कि बहुत जल्द एक उच्च स्तरीय हाई लेवल की जांच कमेटी बना दी जाए, और उसके बाद उन जांच कमेटी में दोनों संस्थाओं से हो सकता है या किसी एक संस्था एम्स या CFSL उनसे एक्सपर्ट उनमें शामिल होंगे, और उसके बाद अब तक जो सबूत मिले हैं उसे जांच के लिए भेजा जाए। मैं आपको बता दूं कि अभी जो हमें जानकारी मिली है, जो हमारे सोर्सेस कह रहे हैं कि अब जो भी पार्ट्स मिले हैं, आज तक की जो अपडेट है कि पुलिस को 25 पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स श्रद्धा के मिल चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अब जो फॉरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट होगा, क्योंकि इसमें 2 जांच होती है, जिस नार्को टेस्ट की बात हो रही है वो फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट करेंगे, लेकिन जो आइडेंटिफिकेशन, जो काउज ऑफ डेथ या मैनर ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो, जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स को हेल्प करेगा, तो ये सारी चीज़ें फॉरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट ही करेंगे, जो एम्स या CFSL में हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो भी बॉडी पार्ट्स मिले हैं उनका ऑटोप्सी होगा, मींस उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। और मीनाक्षी, पोस्टमार्टम से क्या पता चलेगा, क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। एक्यूज्ड हैं लेकिन विक्टिम नहीं है, श्रद्धा हमारे बीच में नहीं है, ना उनके कोई बॉडी है। तो उन बॉडी पार्ट्स में पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिससे ये पता चलेगा, जिसे हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी एग्जामिनेशन। उनसे एज, सेक्स और बॉडी की लेंथ क्या होगी, इन सारी चीज़ों की जानकारी होगी। इसके लिए जो फॉरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट हैं वो एक्सरे, CT स्कैन उन तमाम पार्ट्स के करेंगे। उसके बाद उन्हें जानकारी मिलेगी, वो इनिशियल स्टेज है। उसके बाद फर्दर टेस्ट के लिए DNA टेस्ट किया जाएगा। DNA टेस्ट में भी 2 अलग अलग पार्ट्स में किया जा सकता है, क्योंकि फादर है, मदर नहीं है। क्योंकि फादर और मदर दोनों अगर होते तो 100% कहा जाता है, एक्सपर्ट्स इसे मानते हैं कि उनका DNA
एक्यूरेट मिल सकता है, क्योंकि कहीं पर इस तरह के जो विक्टिम है, जो श्रद्धा है, उनके कोई ब्लड स्टेन नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बहुत शातिर है जिस प्रकार से आफ्ताब ने सबूत मिटाने की कोशिश की, जिस प्रकार से उन्होंने क्लीन वॉश किया, ब्लड को वॉश किया, और कहा जाता है कि शावर चला करके वो पीसेस में किया था, बेरहमी से उसके टुकड़े किए थे। तो ऐसी स्थिति में अब पुलिस जब एक्सपर्ट्स के पास जाती है, जब जांच के लिए साइंटिफिक तरीके से भेजती है, तो डीएनए कराया जाएगा। डीएनए भी दो टाइप का करना पड़ेगा इस केस में। एक जो होता है बायोलॉजिकल होता है, जो उनके फादर या उनके और भी बायोलॉजिकल जो भी रिलेटिव्स होंगे, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए किया जाएगा। अगर उनके मैटरनल साइड से, यानी उनकी माँ के साथ अगर कोई और रिलेटिव है, चाहे मौसी हो, उनका भी डीएनए कराया जा सकता है। और साथ ही साथ जो एक्यूज्ड हैं, जो आफ्ताब है, उनका भी डीएनए कराया जाएगा। लेकिन जो चैलेंजेस हैं, क्योंकि अभी भी टोर्सो और नेक और खोपड़ी नहीं मिली है, अगर वो मिल जाता है तो ये भी पता चलेगा कि कहीं उसका गला तो पहले नहीं दबाया गया। तो ऐसी स्थिति में चैलेंजेस हैं। अब दिल्ली पुलिस जो है तो पूरी तरह से अब इसकी साइंटिफिक जांच पे को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से आफ्ताब जो बयान दे रहा है पुलिस को, तो ऐसे जी बिल्कुल। तो आप देखिए, आप हमें कुछ बहुत जरूरी बातें, बिल्कुल मनोहर, आप हमें कुछ बहुत जरूरी बातें बता रहे हैं। वन, ऑफ कोर्स यू आर decoding what the forensic experts are going to do, what the DNA mapping is going to look like, and on the other hand, of course, bringing us updates from the Mehrauli forest. सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं अपने व्यूअर्स के लिए। अगर आप हमें दिखा सके दृश्य कि कितना घना जंगल है, किस तरह से वो आदमी आया होगा, उसने वो टुकड़े फेंके, कहाँ कहाँ पुलिस ढूंढ रही है, आपने कहा स्निफर डॉग्स भी आज लगे हुए हैं। सबसे पहले विजुअली हमें समझाइए कि कितना घना जंगल है, कितने पुलिस के पर्सनल्स अभी लगे हुए हैं, किस तरह का ऑन ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। बिकॉज एज यू राइटली सेड, स्कल ढूंढना, टॉर्सो ढूंढना डीएनए मैपिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। तो आपको मैं नज़ारा दिखाता हूँ। हमारे साथ कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया हैं। ये आप देखिए, दो पार्ट हैं। एक ये सड़क है जो यहाँ से लेकर के जहाँ मैं मौजूद हूँ 100 मीटर की दूरी पर है, और यहाँ से रात में 2-2:30 बजे आना, क्योंकि घर से वो 2 बजे निकलता था और उसके बाद जो है उस घोर अंधेरे में वो क्रॉस करता था। ये क्रॉस क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 10 से 12 फीट का एक नाला बह रहा है। इस नाले को क्रॉस करते हुए आफ्ताब जो है सो इस घने जंगल में, जो मेहरौली छतरपुर का ये घना जंगल है, इसमें जाता था और अंदर जा करके वो बॉडी पार्ट्स फेंकता था। आपको एक एक चीज़ मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये इस नाले को वो आप रात में, सुनसान इलाका है, कोई अगर यहाँ पर लोग नहीं आते जाते हैं रात में, तो ऐसी स्थिति में उसका आना और उसके बाद बेखौफ होकर के बेरहमी से इस पार्ट्स को एक एक करके, क्योंकि वो पिट्ठू बैग में वो पार्ट्स को ले करके आता था और इन जंगलों में फेंक दिया जाता था। जो सोर्सेज कह रहे हैं कि 4 अलग अलग इलाकों में उन्होंने फेंका था। ये आप देखिए, ये घना जंगल है, मतलब इतना क्रॉस करने के बाद वो रात में आता था। और जब कल पुलिस जब क्रिएशन के लिए आफ्ताब को इसी जंगल में लाई थी और इसी जंगल में उससे पूछा गया था, और वो पूछा गया था कि आपने कहाँ कहाँ और फेंका है। ये आप देखिए, जब अंदर जाएंगी तो आप जा नहीं सकती हैं। इस तरह के यहाँ पर नज़ारे हैं और खौफनाक, क्योंकि रात में जंगली जानवरों का भी डर है, क्योंकि 500 एकड़ में ये जंगल फैला हुआ है मीनाक्षी। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकती हैं। तो अब पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, सिविल ड्रेस में भी पुलिस अंदर है। एग्जैक्टली, सो देयर आर 8 teams of police which are present at that forest. It's of course a very dense jungle. It looks so scary right now. One can imagine what the scene would be like. Of course, late at night at 2 a.m., 1 a.m. as is being alleged. That's when, of course, Aman used to unfortunately dump and shockingly dump body parts of Shraddha. All right, I'm also being joined by one of Shraddha's friends. She's just going to join us very, very shortly. All right. So Shraddha Jaiswal has joined us. She is a college friend of Shraddha. Shraddha, first of all, thank you for joining us. I can understand it must be a very difficult time for all of you who have known Shraddha personally. But could you tell us a little more about her? Did you know anything about her relation with Aftab? Did she ever discuss it with you? Did she ever mention any sort of discord between the two of them? Thank you so much. मैं शारदा की फ्रेंड थी एंड आई
I still remember, and we were classmates at the time of 2018 while appearing TYBMM. I completed 2018, and after that I shifted for masters, and I was in contact at that time, and after that I was not in contact, but I came to know that Shraddha was in depression, means he was in relationship and shifted to Delhi. You said she was in depression. Did she tell you this herself, or a common friend tell you? And No. did you know the reason for her being depressed? No, I didn't know. Actually, I came to know that जब वो आई थी last year at the time of 2021, she was fully shaved. Means she was in bald. She was fully shaved due to depression or something was the reason. I don't have clearance about it. जी, क्या उन्होंने आपको कभी बताया था अपने और आफ्ताब के रिश्तों के बारे में, या कभी बताया था कि वो किसी के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं, आफ्ताब नाम के इंसान के साथ? कभी आपकी इनसे पर्सनली मुलाकात हुई थी? नहीं यार, आफ्ताब से मेरी पर्सनली मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि 2018 तक वो मेरी क्लासमेट थी, और श्रद्धा और शारदा को लेकर काफी कंफ्यूजन होता था। खास करके श्रद्धा को शारदा बुलाया जाता था और मुझे श्रद्धा बुलाया जाता था। तो और इसके अलावा लेकिन बात करें उस समय की, तो उस समय करेजियस थे काफी। उसके इस तरह से जिस तरह से अभी उसके साथ हुआ है, यकीन नहीं हो रहा है कि हाँ उसके साथ ऐसा हो सकता था, या वो किसी की बातों में ऐसा आ सकती है, या अगर उस पर दबाव डाला जाता तो वो पीछे कैसे हट गई। जी, हमें ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि 2018 तक आप श्रद्धा के साथ टच में थे। किस तरह की लड़की थी वो? एक्सट्रोवर्ट थी, फ्रेंडली थी? क्या उस टाइम पे उन्होंने कभी भी आप लोगों से, अपने फ्रेंड सर्कल में आफ्ताब का जिक्र किया? जी नहीं, मेरे सामने उसने आफ्ताब के बारे में जिक्र किया, लेकिन हाँ वो अपनी रिलेशनशिप्स को लेकर ज्यादा किसी से साझा नहीं करती थी, और वो कुछ ही फ्रेंड्स से वो शेयर करती थी। जी, पर जब श्रद्धा पूरी तरह इनकम्युनिकाडो हो गई, सारे दोस्तों से नाते टूट गए, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे बिल्कुल दिखना बंद हो गई, तो क्या आपको भी, इवन दो आप उनके साथ बहुत ज़्यादा टच में नहीं थे, पर क्या आपको भी वो थोड़ा अलार्मिंग लगा कि अगर कोई इतना एक्सट्रोवर्ट है, इतने सोशल मीडिया पे एक्टिव है, हाउ इज़ इट कि सडनली वो एक दिन महीनों तक गायब हो जाए सोशल मीडिया से? कहीं ना कहीं हर कोई कंसर्न हो गया था कि क्यों, क्या ऐसा हो रहा है, लेकिन लगा कि शायद ऐसा कुछ, क्योंकि किसी ने ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, या फिर वो आफ्ताब के साथ है, आफ्ताब इस तरह से दरिंदगी दिखाएगा, आफ्ताब उसकी हत्या कर देगा। क्योंकि ऐसा लगा था ठीक है, अनबन तो होती है, झगड़े होते, शायद हो सकता है बाद में ठीक हो जाए, और कहीं ना कहीं यही वो भी मानती थी, श्रद्धा भी, और फैमिली की डर से, वो एक मिडिल क्लास फैमिली की थी, इसलिए शायद वो वापस नहीं आना चाहती कि उसने इतना बड़ा डिसीजन लिया, आफ्ताब के साथ रहने के लिए उसने डिसीजन लिया, तो सब कुछ शायद ठीक हो जाएगा। जी, आप कह रही हैं कि फैमिली शायद इस रिश्ते से बहुत खुश नहीं थी। क्या इसके बारे में आपको कुछ पता है? किस तरह के रिलेशंस थे उसके अपने पेरेंट्स के साथ, स्पेशली फादर के साथ? क्योंकि काफ़ी खबरें आ रही हैं कि ये दोनों आपस में, द फादर एंड डॉटर, टॉकिंग टर्म्स पे नहीं थे। जी, उसके पिताजी खुश नहीं थे। ऐसा कुछ जो क्लोज फ्रेंड्स थे उससे, जिससे वो साझा करती थी, शेयर करती थी, उनसे उन्होंने, जब मेरी बातचीत हुई उसकी हत्या के बाद में, तो यही पता चला कि उसके पिताजी नहीं खुश थे। पिताजी शायद वो ये कहना चाह रहे थे कि मतलब मत जाओ दिल्ली, वो शायद इस रिलेशनशिप को लेकर ही नहीं खुश थे अब। अच्छा, तो फादर इस रिलेशनशिप से कन्विंस्ड या सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए उनके बीच में अकॉर्डिंग टू हर क्लोज फ्रेंड्स, आई एग्री। बट क्या आपकी इन क्लोज फ्रेंड्स से बात हुई है? क्या इन क्लोज फ्रेंड्स ने, बिकॉज आपका एक कॉमन फ्रेंड सर्कल है, क्या उन्होंने आपको कभी बताया आफ्ताब के बारे में? क्योंकि बहुत खबरें आ रही हैं कि श्रद्धा हैड रीच्ड आउट टू अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, जहां उन्होंने बोला था कि आफ्ताब उनके साथ मार पिटाई करते हैं, परेशान करते हैं। क्या ऐसा कुछ आपने किसी कॉमन फ्रेंड से सुना? जी, कॉमन फ्रेंड से बातचीत के दौरान ये, मतलब जब मैंने बात किया थी कि जब भी हत्या हुई तो ये शॉकिंग था, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि हत्या होगा, और जब बात हुई तो फिर मुझे ये पता चला कि यस प्लीज गो अहेड, वी कैन हियर यू। हाँ, तो ये मुझे पता चला कि लगातार जिस तरह से उसे मारपीट किया जा रहा था, वो परेशान थी, और वो ये भी जिस तरह से हमने कई फोटोज भी देखी, वो गई हुई थी बाहर घूमने के लिए, और वो पूरी तरह से खुश मिजाज थी, वो शेयर करना जरूरी नहीं समझती थी अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, वो हर किसी से बताती नहीं थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि वो दबाव में थी, उसे ब्लैकमेल कर रहा था, लगातार उसे कह रहा था कि वो हत्या कर, श्रद्धा का भी हत्या कर देगा और खुद भी सुसाइड कर लेगा। जी, तो ये बातें आपको किसी कॉमन फ्रेंड ने बताई हैं कि वो श्रद्धा को धमका रहा था खुद सुसाइड करने के, या उसके मर्डर करने की धमकियां दे रहा था?
कहीं ना कहीं जब हत्या हुई उसके बाद में जब ये खबरें आने लगी तो मैं शॉक्ड हो गई और मैं कोशिश की कि हर किसी से प्रयास करने की, बातचीत करने की कोशिश, क्या हुआ अदालत से श्रद्धा के साथ और ऐसा कैसे हो गया। तो पता चला कि हाँ वो परेशान थी और वो ज्यादा फैमिली से दूर थी और ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी, अपने रिलेशनशिप को लेकर कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब थी। और पिछली बार मुझे ये भी पता चला है कि हाँ ये वो आई हुई थी लास्ट ईयर 2022 में, जी यानी कहीं ना कहीं वो अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती थी। वो कॉलेज के दौरान काफी हर चीजों में पार्टिसिपेट करती थी, चाहे वो एडवर्टाइजिंग फील्ड से हो या फिर कोई भी फील्ड से, वो हर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी। और उसे लग रहा था कि मैं वापस से शायद वो दुनिया में जाऊं और अपने करियर को ध्यान दूं, और इसके लिए वो आई हुई, किसी से इंक्वायरी भी की थी कि हाँ मुझे मैं रिजल्ट लेने आऊं, कब लेने आऊं। So she wanted to build her career, but it looks like that was not to be. Thank was you, so ambitious, Shraddha. Yes, as we've taken already your I point. think. Thank you, Shraddha, for joining us on this broadcast and sharing these personal details about your friendship with Shraddha. Dr. Sneha Sharma, consultant psychiatrist from Akash Hospital, with us. Also joining us, Dr. Amarnath Mishra, forensic science expert. I'm going to go first to you, Dr. Sneha Sharma. Dr. Sharma, we just heard what a very close friend of Shraddha had to say. An extrovert, gregarious girl meets a man, falls in love. An ambitious girl falls so deeply in love that she's unable to break the relationship despite of it being abusive, despite of the man threatening to kill her. What do you think really, what do you think really happens as far as women are concerned? Why does this type of attachment, gets built with a partner who is abusive? Why does it become so difficult? Because this isn't the only case. It's ended in a very grisly manner. But similar cases, I'm sure, exist throughout the country, perhaps the world, where women are unable to get out of abusive relationships. You're absolutely correct. And when it comes to violence, especially domestic violence, it's been seen that more commonly women are at the receiving end of violence, but also sometimes men. It is quite, the dynamics of a relationship are very complex, and so it's not so easily it's not so easy to understand that what's right and wrong. Mostly when these people, the victims, they are living with an abuser, there is a sense of belief that the individual would change at some point of time. And what you have to understand also is that this behavior is sporadic. So a lot of times this behavior is not constantly happening with the victim. The abuser is smart enough to, I'm using him because the prevalence is more in male. So the abuser is usually smart enough to understand that the psychology of the victim and is able to manipulate them either by gifting them expensive things, expressing their sorry and apologizing them for repeated abuse later on, and also reassuring them that they would change at some point. And individuals who are victims in such situations has been seen that they have a complex childhood where growing up they have formed attachments, and they form attachments which are very severe. There's a need for the individual to be liked, and these sort of relationships then prevent the individual from going away. When for an outsider it's very clear cut that an abuse is happening, a violence is happening, and why can't the person step away from the relationship? And let me also go across to the expert who's with us. We have a forensic expert with us. Welcome, Dr. Dr. Amarnath Mishra. Sir, as a forensic science expert, how difficult do you think it's going to be for the team analyzing the samples? You just heard my colleague who's reporting from ground zero, the skull missing, the torso missing. The police has only been able to collect about 20 to 25 bones. Nobody can say for sure if it's Shraddha's or someone else. The murder was committed months ago. Really, with this type of a limited evidence and a crucial amount of time since the murder took place and from the time to the collection of the evidence, that a lot of time has elapsed. How difficult do you think it's going to be for the analytical team, really for the forensics team, to analyze whatever is available to them, and how do they really provide concrete evidence beyond belief to ensure that the man sees really the most exemplary punishment in the court of law? Yes, in this case, as Aftab cut in the pieces,
the body of Shraddha. So there is a chances of the tissue, blood, and also hair in that house as well as in that forest where throwing up that pieces. On the basis of the bone which recovered by the police personals, we can go for the DNA analysis for the establishing relationship with their relatives. That is that bone from of Shraddha or not. So already I listened in your news also. We will go for the DNA analysis, DNA profiling, and that is if both mother and father alive, so we will take the sample and match with that bone sample. Or if only mother, so we will go for the mitochondrial DNA analysis, and we will confirm that bone, that piece is of Shraddha. So that is for the identification purpose. But for the establishing the guilty of Aftab in this case, as per the evidence, we also going to look for some another evidences, like if there is finding of hair in the forest, it means that is the hair of Shraddha, so we can establish the relation. Then if that soil on the shoes of Aftab, so that also establish that forest soil is available on that on shoe of the Aftab, that is also important evidence. As well as we will go for further evidence, that is the cyber forensic evidence, that is the mobile data, like Aftab uses the social media of Shraddha. So in that time, we can also find out the different location where he used that social media. So on that basis, we can also come on the very No, close of course look they have. about this case. I agree. They do have, of course, as far as cyber trails are concerned, mobile records, online records are concerned, but specifically talking about forensics, likely to issue or likely to face a lot of challenges. That's really the moot point. Dr. Sneha Sharma, if you could come in here and help us break down really the anatomy of this depraved mind. What really makes a person so animalistic, so brutal that they not only murder their partner, they cut them up in parts, store them in the freezer. More and more grisly details are tumbling in. Some reports even saying that they used to put makeup on, the skull kept in his freezer. Really, what would you say about these gory and grisly details first of all emerging? And what does this tell you as an expert, as a psychiatrist, really, as I said, about the depravity of such a perverted mind, ma'am? So what the news information that's coming in and the facts that are coming in suggests that this individual went to great extent to mutilate the body to make sure that they are not caught in the doing that illegal act. So the information that emerges, if you're trying to look at the psychological perspective of this, is that the person is could plan in advance, and the information and facts suggest that the act itself happened quite a while back, and for an individual to plan all of this means that it was hardly an act of impulsivity, where it was not a sudden aggression that happened that led to this the act, the consequences of which is also might suggest that substance use, which is commonly found when associated with these sort of aggression, could also be involved in the picture, or could be contaminating the whole scene, which means that the individual could be for somebody to actually go beyond the lines of humanity and to actually do a act which is so gruesome. Means that this person lacks empathy or total trying to put themselves in other person's shoe. They have no remorse or guilt about their act, and so what it's essentially suggesting is that this is inhumanly act not frequently found in individuals. So it's one-off case where somebody goes to that extent to commit an act and then hide it in that behavior. Well, absolutely, and I'll also
try and circle back to you, if time permits, really about, the sort of impact which these shows really have on us, because reports also coming in that he was inspired by some American crime shows based on serial killers. But before that, Dr. Amarnath Mishra, if you could come in here, sir. Take us through really how a DNA mapping is done. Here, of course, there are multiple facets and aspects to it. You need an autopsy, but you only have bones. You need the DNA. The mother is no more. Only the father's DNA is available. So, maternal DNA not available. Far as the man is concerned, the police has scanned his home. Not much has been found there. A huge time, as I said earlier, has elapsed ever since the murder, the grisly murder took place, and when the investigations began. The challenges which the forensics team could face, sir. Of course, if mother is not alive, so in that cases we can go for DNA analysis on the basis of some sibling DNA body fluid samples. Okay, and if only father, so there is experts, DNA experts know how to establish the identification by the DNA analysis, as well as on the basis of bone, other anthropological examination is required, so we will do. And if skull is going to find, so in that case we can go for the facial superimposition and match with the photographs. So there are many things for the identification, and major things required to establish the guilty of Aftab if he is saying that he killed Shraddha. Absolutely, and we're also being joined by Ranveer Singh Sharma. He's a former IG. Thank you, sir, for joining us. It's literally the fag end of the debate when you have joined us. But take us through the challenges, as I said earlier, the police can face. We've discussed the challenges which the forensics team could face, considering, of course, the DNA mapping, autopsy, establishing, of course, the chain, the link between the bones found and Shraddha's family is going to be a little difficult. But for the police as well, it's going to be a rather challenging case, isn't it? It isn't just a straightforward case of murder, a grisly murder. It makes for huge headlines. Of course, it's a sensational case, but the police needs to prove it beyond doubt in a court of law. What do you think is going to be really the next step far as the police is concerned to ensure that the case is watertight? Ma'am, is question for me? Yes. Hello? Yes, Are Mr. you Singh. hearing me? Yes, Mr. Singh, you're audible. The question's for you. Please go ahead, sir. Can you please repeat your question once more? Right. The question was simply the challenges in front of the Delhi police to ensure that the case stands the judicial scrutiny. A huge amount of time has elapsed since the murder took place. The weapon has not been found. Skull, torso still missing. There is certainly cyber, trail which the police is trying to establish, but there are a lot of loopholes far as this case is concerned. What do you think are going to be the challenges in front of the Delhi police to make a watertight case, sir? Ma'am, yes, you are right. There are many challenges because this was actually blind murder case, and police successfully have traced it out, no doubt about it. But so far as challenge in the judicial court is concerned and evidence is concerned, it is a big question for the police. Now they have to do a lot of hard work. The first work is to collect the dead part of the dead bodies of Shraddha, number one. Yes. Hello? Yes, we can hear you, sir. Please go ahead. Hello? Finish your point. Yeah, can you hear me? Yes, and we the can hear you, second sir. one is after collecting the part of the body parts, they have to go for the DNA test, whether they belong to the Shraddha or not. Thirdly, the interrogation of the criminal is also very important. Whatever the statement he is giving before the police, whether these circumstantial evidence is linked with that interrogations or their statement of the criminals is it correct or not? That is the second part of the investigation. And the thirdly, ma'am, the evidence of the nearby neighbors, that is also very important to find out the activities of the boy as well as the girls. Yeah. What were the circumstances, why he was so adamant to kill that Shraddha.
The thirdly is also very important, that there is a chat between the boys and girls and with the friend also. That chat has to be collected in the telephone, in the mobile phone, and that will be also a circumstantial evidence which will help to link the murder case of investigations and to prove in the court whether he has the same criminal who has committed the murder of Shraddha, and they are the same bones and same parts of the body parts which was murder of the Shraddha. Absolutely, from recovering the murder weapon to establishing the DNA link, forensic test, ensuring that his confession matches the story which the police recreates. The police has many challenges in front of it, but certainly the confession of the prime accused, the collection of a large number, at least 20 plus body parts, testimonials of friends who had spoken about how abusive the relationship was, and the cyber trail of Aftab does strengthen the Delhi police's case. End of the day, it's an extremely grisly crime which has taken place, shaken the conscience of the conscience of the entire nation to the core. Exemplary punishment the only way out? That's the big question, of course, which we leave our viewers with. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.